10 ملین प्रेगनेंसीज سالانہ ہوتی ہیں، جن میں سے 4 ملین unwanted pregnancies ہوتی ہیں. اور جب کبھی بھی انوانٹیڈ پریگننسی ہوتی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ میں 26 سے 28 لاکھ ابارشن ہر سال ہو رہے ہیں. 1000 سے 1200 عورتیں ہر مہینے اس ملک میں مر جاتی ہیں. ہم عورت کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں. پہلے اپنی پریگننسی پہ تو اس کو اختیار دے دیں ہم سب سے. اور وہ جو ڈاکٹرز گزر رہے ہیں وہ اپنی ناک پہ انگلی رکھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس سے بہت بدبو آ رہی ہے. جب یہ 13 سال کی تھی تو کم عمری میں اس کی شادی 40 سال کے آدمی سے کر دی گئی. ریپیٹڈ پریگننسیز کے بعد چوتھی پریگننسی میں بچہ جنتے وقت اس کا یوریٹر پیشاب کی نالی ڈیمیج ہو گئی and she used to leak urine. So contraceptives پہ one lady told me here کہ اس کا افیکٹ کچھ نہیں زیادہ نیگیٹو آیا اور ان کی جو پیریڈ سائیکل ہے menstrual سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. اگر میں یہ فلانی دوا کھاؤں گی تو اس سے موٹی ہو جاؤں گی، وزن بڑھ جائے گا. یہ دوائیں کھانے سے بال گر جاتے ہیں اور چہرے پہ چکناہٹ زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں مائیں جب متواتر پریگننٹ ہوتی رہتی ہیں 60% مائیں خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں. پھر بچے کو اگر یہ دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں پریگننسی کے درمیان تو اس صورت میں کیلشیم کی کمی بھی واقع ہوئی. محلے دیہات میں اگر گائے بھینس مر جائے نا شور مچ جاتا ہے. اس سے انکم آتی ہے گھر میں. 5ویں پریگننسی میں کوئی عورت دنیا سے چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عورتیں تو مرتی رہتی. السلام علیکم ڈاکٹر رب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. Thank you, ma'am. Thank you for inviting me. It's a great opportunity. سو میرا سب سے پہلا سوال، سنس ہم گرین اسٹار اس کی کنٹریبیوشن اور ایک بہت ہی زبردست ٹاپک پہ آج گفتگو کر رہے ہیں، تو واٹ براٹ یو ٹو دس ڈیولپمنٹ ورلڈ؟ کیونکہ لوگ تو یونیلیور بھی جانا چاہتے ہیں، لوریال بھی جانا چاہتے ہیں اور ششکی والی لائف بھی گزارنا چاہتے ہیں، تو واٹ براٹ یو ٹو دس سیکٹر اسپیسیفکلی؟ Okay, it's a long story. مگر I started off as a medical doctor اور سرجن بننا چاہتا تھا، نہیں بن سکا. پھر I went towards the pharmaceutical industry and worked there for 25 years in marketing and sales and training various departments. And that was a fantastic experience because while I was not able to serve as a doctor, I was able to connect with the doctors on a very different platform. اور وہ پلیٹفارم یہ تھا کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ڈاکٹرز میڈیسن سرجری کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ان کو ساری کتابیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، بیسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. ویئر دے لیک از ہاؤ ٹو کنیکٹ وتھ ہیومن بینگس. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اب نہ وہ ڈاکٹر رہے نہ وہ مریض رہے. So a lot of it was becoming mechanical. So during my pharmaceutical career, very early, I was fortunate enough to work with the companies and the teams that believe that we are not going to sell medicine. We are going to talk about developing the capacities of medical professionals to better connect with patients. Amazing. And آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ محلے کے جی پی کے پاس 200 پیشنٹ آتے ہیں اور ایک کنسلٹنٹ جو FRCS کر کے آتا ہے بعض اوقات ڈاکٹر صاحب کو اپنی پریکٹس سیٹ کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. بالکل سنا ہے نا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے نامی گرامی ڈاکٹر صاحب کے بجائے محلے کے جی پی کے پاس لوگ جا رہے ہیں؟ بیکاز مام سمجھ میں یہ بات آئی کہ 6000 سالہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. ارے پیشنٹ سننے نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کو، اپنی باتیں سنانے آتا ہے. True. So when I learned this during my career in pharmaceuticals, that if you really want to be respected as a company and a doctor would preferentially prescribe, associate with him in building capacities. So I started developing their capacities as a mainstay, continuing medical education, continuing professional development. And then I wanted to work on an even larger canvas. And that larger canvas was that for a third world country like Pakistan, preventive gynecology, preventive pediatrics, آپ کتنے لوگوں کے دل میں اسٹینٹ ڈالیں گے کیونکہ سگریٹ پی کے کولیسٹرول بڑھا کے انہوں نے اپنے دل کی شریانیں تنگ کر لی. کتنے لوگوں کے گردے بدلیں گے آپ، isn't it؟ کتنے لوگوں کو اسٹروک کے بعد آپ ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تو the best thing is preventive aspect. Gynecology میں prevention, obstetrics میں prevention, pediatrics میں prevention. So
this preventive aspect, creating awareness about the disease کہ پہلے مریض بنے ہی نہ, لوگ بیماری سے بچیں کس طرح سے. This is the area which health developmental sector focuses. And that's where I ended up. Now I am with Green Star Social Marketing, with a hybrid of social marketing and social franchising. I'll tell you a bit more later. Of course. And I've been here for almost 9 years. And I'm really delighted to be part of your conversation. Thank you so much. Because آپ کی ونڈو سے ہمیں یوتھ تک پہنچنا, اور خاص طور پہ وہ یوتھ جو کہ لڑکیوں اور خواتین پر مشتمل ہے. بالکل. Because for Green Star, they are the game changers. تو جیسے کہ ہم کل بات کر رہے تھے, آپ نے مجھے کچھ اسٹیٹس بھی بتائے کال پہ, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہماری ایک کال پہ بات ہو گئی پہلے, سو دیٹ آئی ایم لٹل مور اویئر. سو یہ جو نمبر ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ 10 ملین پریگنینسیز سالانہ ہوتی ہیں, جن میں سے 4 ملین انوانٹیڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں, اور آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 26 سے 28 لاکھ ابارشنز سالانہ ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. تو what is the hard truth behind it, and what Green Star is contributing towards it? Fantastic. I think it's a very fundamental question. جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح یاد رکھا ہوا ہے, 10 ملین pregnancies ہر سال, 4 ملین unwanted, اور جب کبھی بھی unwanted pregnancy ہوتی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور abortion is a complication of pregnancy. اور اس complication کے نتیجے میں 26 سے 28 لاکھ abortion ہر سال ہو رہے ہیں, اور یہ کافی پرانی فگرز ہے, 5-6 سال پرانی فگرز. جب 26 سے 28 لاکھ ابارشن ہو رہے ہیں تو ان کے نتیجے میں 12 سے 14 ہزار اموات, خواتین کی اموات ہر سال, یعنی 1000 سے 1200 عورتیں ہر مہینے اس ملک میں مر جاتی ہیں. کیوں مر جاتی ہیں؟ اس لیے مر جاتی ہیں بیکاز the system failed them. They were not children of lesser God. اور کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی ہے. They died because, first of all, they did not want to get pregnant, so they did not have access to one of the methods of contraception. And when they became pregnant and aborted, still nobody offered them. So we failed them twice. So we took away from that woman the choice to decide when she wants to get pregnant, how many times she wants to get pregnant, and what is the spacing she is expecting between her pregnancy so that her body recovers. So I think ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, and I'm really glad that we are talking about these things because recent elections have really motivated me big time, because the youth of this country has shattered all beliefs, shifted all paradigms, and the way they have worked through these elections and brought a revolution, it's absolutely remarkable. And we are also seeing in Green Star sub-Sitara clinics, ہم رپورٹ کرتے ہیں ہماری Green Star social marketing and social franchising کا hybrid ہے. پچھلے 32 سالوں میں Green Star نے 23,000 سروس پرووائڈرز کو پاکستان کے تھولرز میں ٹرین کیا ہے. یہ کہلاتی ہیں سب-Sitara clinics. ان میں جی پیز ہیں, لیڈی میڈیکل آفیسرز ہیں, سی ایم ڈبلیوز ہیں, ایل ایچ ویز ہیں, جن کی ایک کلینک چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو ٹرین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ایسا ایکو سسٹم کیا جائے جہاں کہ خواتین کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں انفارمیشن اور سروس پرووائڈ کی جائے. سو دا بگیسٹ ریزن فار the deaths which are not accounted for and there are no headlines made is because we failed that woman twice. So Green Star makes the awareness about the contraceptive measures within the community. What these Green Star does is that around every clinic, we have a community of about within 2 kilometers radius of about 5 to 10 to 15,000. And within those community, we go door to door in neighborhood meetings کے ذریعے. اور یہ کون کرتا ہے؟ ہماری community health mobilizers and who are known as ستارہ بازیز. So Green Star کی ستارہ بازی گھر گھر جاتی ہے, ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتی ہے, نیبرہڈ میٹنگ کرتی ہے, وہاں لوگوں کا پتہ چلاتی ہے کہ فیملی کی میرٹ اسٹیٹس کیا ہے, ان کے بچے کیا کتنے ہیں, اور اگر 2-3 بچے ہو گئے ہیں یا اگر وقفہ چاہتی ہیں تو کس طریقے سے وہ سروس پرووائڈر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس آ کے کوئی نہ کوئی میتھڈ لے سکتے ہیں. So Green Star is contributing to the development of Pakistan through family planning and family health solution. اور یہ جو ہے solution ہے, یہ abortion کی complications سے بچانے کے لیے ان ماؤں کو بہت کارگر ثابت ہو رہا ہے.
Okay. So my next question is, क्योंकि मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर रही थी, and I'm glad they are brave enough कि उन्होंने इस पे मुझसे बात की. So contraceptives पे one lady told me here कि I used contraceptives and मुझे उसका effect कुछ नहीं ज़्यादा नेगेटिव आया, और उनकी जो पीरियड साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, वो डिस्टर्ब हो गई. तो एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स हो रहे थे और एक टाइम पे बिल्कुल ही होना बंद हो गए. So she went to known hospital here in Karachi and the doctor said कि यार आपको किसने कहा था लेने के लिए. अच्छा, उन्होंने किसी से बात करके नहीं, आई एम श्योर उन्होंने गूगल पे देख के या अपनी सेल्फ मेडिकेशन करके कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव सेलेक्ट करके उन्होंने यूज किए थे. बट शी इज नाउ वेरी स्केर्ड ऑफ द फैक्ट कि यार ये पिल्स जो है ना वो हमारी साइकिल को डैमेज कर देती हैं, तो अब मैं इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, और डॉक्टर ने भी मुझे और डरा ही दिया है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव्स साइड इफेक्ट्स? मैम, ये भी बड़ा फंडामेंटल सवाल है कि अगर पाकिस्तान की आबादी जो 240 मिलियन हो गई है और 2030 तक तो शायद हम डबल हो जाएंगे वहाँ पे, तो लोगों का सुनामी हमें बहा के ले जाएगा. पॉपुलेशन का बेदरेग इस्तेमाल बढ़ाव इसलिए हो रहा है कि कपल्स के पास कोई ना कोई एक्सेस नहीं है उन मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन से, और अगर एक्सेस भी है तो उसमें से कौन सा मेथड उनके लिए मुवाफिक है, उनको इस चीज़ की खबर नहीं है, उनकी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है. इसकी इंफॉर्मेशन अगर मिल भी रही है, बजाय सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके जनरल प्रैक्टिशनर्स, कोई गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन के, मोहल्ले का जो केमिस्ट है वो अनशंट दवाएं उठा के भेज देता है. अजीब अजीब मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन लोगों के जहनों में बैठे हुए. मसलन अगर मैं ये फलानी दवा खाऊंगी तो इससे मोटी हो जाऊंगी, वजन बढ़ जाएगा. ये दवाएं खाने से बाल गिर जाते हैं और चेहरे पे चिकनाहट ज्यादा हो जाती है. अगर इंजेक्शन लगा लेंगे या IUCDs का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कहीं जिस्म में दूसरे हिस्से में सरायत कर जाएगी. सो मुशाहिदा ये कहता है, ग्रीन स्टार ने बहुत सारी स्टडीज की हैं और इंटरनेशनल डेटा भी मौजूद है कि वो बेसिक वजह जिसकी वजह से यंग लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनका कसूर नहीं है, उन तक इंफॉर्मेशन सही पहुंच ही नहीं पाती है और उनके जहनों में बेपनाह बदगुमानियां हैं, गलत इंफॉर्मेशन है, मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जो इतने सरायत कर चुके हैं कि वो अब किसी मेथड से मुतनफ़र हो गए. उस पे सोने पे सुहागा कि उनके पास एक मॉन्स्टर इन लॉ भी होती है जिनको काके कराने, और अगर शादीशुदा औरत है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करने देती है, या हस्बैंड की प्रेफरेंसेस. मसलन कॉन्डम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शॉर्ट टर्म मेथड है, लेकिन कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं हो पाता. सबसे सेफ या बेहतर जो होता तरीका है वो IUCDs या इम्प्लांट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म मेथड्स कहलाते हैं. इसमें तो हर मेथड, उसमें कॉन्डम भी शामिल है, अद्वियात शामिल हैं, इंजेक्शन शामिल है, टैबलेट शामिल है, और इम्प्लांट्स हैं, और यूट्रस में डालने वाली IUCDs हैं. हर मेथड हर किसी औरत के लिए मुवाफिक नहीं है. आपका डॉक्टर ही इस काबिल है और जिसकी ट्रेनिंग हुई है कि वो आपसे हिस्ट्री ले और आपके लिए आपकी मर्जी से. दिस इज व्हाट empowerment means. Green Star is empowering women to make decisions and choices with her engagement. हम औरत के हुकूक देने की बात करते हैं, पहले अपनी प्रेगनेंसी पे तो उसको इख्तियार दे दें हम सबसे बढ़ के. सो ये लड़कियां जिनका आप तस्करा कर रही हैं, हमारा माशरा इनसे भरा पड़ा है. उसकी वजह ये है कि इनको रसाई नहीं है उस सर्विस प्रोवाइडर तक या उस इंफॉर्मेशन या केयर गिवर तक या ग्रीन स्टार की सिताराबाजी तक जो उनको सही दुरुस्त मालूमात दे और उन्हें किसी न किसी सेंटर पर ले जाए. इस सिलसिले में 0800-11171 0800-11171 पे फोन करके ये पूछो, हेल्पलाइन है 24/7. इस पे कोई भी फोन करके 0800-11171 पे फोन करके प्रेगनेंसी और से रिलेटेड, माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड कोई सवालात हैं, उनके मिसकंसेप्शंस हैं, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, they can get this information. Okay, since we're talking about the problems, मुझे याद है कि आप कल मुझे एक 14th अगस्त से रिलेटेड किस्सा बता रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे रिपीट करें यहाँ ऑडियंस के सामने and share the problem with us. मैम, ये जब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का कोई ना कोई मेथड नहीं होता है तो प्रेगनेंसी रिपीटेड हो रही होती है. राइट. कतर हॉस्पिटल है, दोपहर का वक्त है, OPD में एक 17 साल की बच्ची, उसका नाम इस्तियारत के तौर पे हम सितारा ले लेते हैं.
ستارہ اوپیڈی میں بیٹھی ہے, اس کے پاس کسی سینئر ڈاکٹر کا انتظار میں ہے, اپنی ماں اس کی برابر میں کھڑی ہے, اس کے پاس سے ڈاکٹرز گزر رہے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹرز گزر رہے ہیں وہ اپنی ناک پہ انگلی رکھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس سے بہت بدبو آ رہی ہے. قریب سے دیکھیں ذرا تو اس کے شلوار کے اوپر دھبے بھی پڑے ہوئے, پیشاب کے دھبے. لوگ وہاں سے کترا کے نکل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور اس کی ماں اس کے بارے میں کہہ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھو, اس کو کچھ کرو, میرے لیے تو یہ بدنامی کا باعث بن گئی ہے. عورتیں کتنے بچے پیدا کرتی ہوتی ہیں, اور اگر کچھ خرابی ہو گئی ہے تو پھر دنیا سے چلی جاتی ہیں. ستارہ سے تو یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ مر جاتی. آپ یہ سوچیں کہ کوئی ماں کس مینٹل ٹراما سے گزری ہوگی جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ بات کی. ہوا کیا تھا, جب یہ 13 سال کی تھی تو کم عمری میں اس کی شادی 40 سال کے آدمی سے کر دی گئی تھی. اچھا. ریپیٹڈ پریگننسیز کے بعد چوتھی پریگننسی میں بچہ جنتے وقت اس کا یوریٹر, پیشاب کی نالی ڈیمیج ہو گئی, اینڈ شی یوزڈ ٹو لیک یورین. اس کا قصور نہیں ہے, سسرال والوں نے مار پیٹ کے, کیونکہ اس سے بدبو آتی تھی, شی یوزڈ ٹو لیک کانسٹنٹلی, پیمپرز وغیرہ باندھے, مگر گاؤں دیہات کے اندر پیمپر نہیں بن پاتے ہیں, اور یہ مضافاتی علاقوں سے آئی ہوئی تھی. اس کو مار پیٹ کے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی, مگر ایسے لوگوں کو شاید اللہ بچا کے لے رکھتا ہے. یہ بھاگ دوڑ کے کسی طریقے سے قطر ہاسپٹل آ گئی. یہاں ان کی ملاقات ایک سینئر گائنیکالوجسٹ آبسٹیٹریشین اس کمپنی کے مشہور, ان سے ملاقات ہو گئی, اور انہوں نے اس کی سرجری کی. سرجری میں 1-2 ٹانکے لگانے ہوتے ہیں جس سے وہ پیشاب کی جو لیکنگ نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے, فسٹولا ریپیئر کہلاتا ہے وہ. اور پھر اگلے دن جب ستارہ کو بیٹھ کے دیکھا تو شاید کئی سالوں کے بعد پہلی مرتبہ وہ مسکرائی. وہ 17 سال کی لڑکی جو شاید 37 سال کی لگ رہی تھی, پہلی مرتبہ مسکرائی تھی. یہ روز روز کی کہانی ہے, یہ پیری اربن سلمز کی کہانی نہیں ہے. گاؤں دیہات میں یہ عام ہے, بڑی عمر کے لوگوں سے شادی, پری میرٹال کاؤنسلنگ کا نہ ہونا, کم عمری کی شادی اور اس کے بعد پھر کمپلیکیشنز. جہاں مائیں جب متواتر پریگننٹ ہوتی رہتی ہیں تو اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ان میں سے آنے والی, اسپتالوں تک آنے والی 60% مائیں خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں, 80% وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہے. پھر بچے کو اگر یہ دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہے پریگننسی کے درمیان تو اس صورت میں کیلشیم کی کمی بھی واقع ہوتی ہے. تو کیلشیم کی کمی, خون کی کمی, وائٹامن ڈی کی کمی, اور اس مختلف کمیوں سے اگر خدا نخواستہ زچگی کے دوران بلیڈنگ واقع ہو جاتی ہے تو یہ لڑکی دنیا سے چلی جاتی ہے اور کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی. گلی محلے دیہات میں اگر گائے بھینس مر جائے نا, شور مچ جاتا ہے, کیونکہ دودھ دیتی ہے, اس سے انکم آتی ہے گھر میں. 5ویں پریگننسی میں کوئی عورت دنیا سے چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, عورتیں تو مرتی رہتی ہیں. یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کی ستارہ بے پناہ رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں انٹیریئر سے آنا ہوا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سیلاب آیا پچھلے دنوں تو بلوچستان میں بڑی تباہ کاری ہوئی, اور راجن پور اور دادو کا علاقہ بہت زیر آب آ گیا. اس مین روڈ کے اوپر 14 اگست مناتے ہوئے ہم نے جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی, پوز کی قطاریں اندر قطار لگے ہوئے تھے, اور ان دونوں کے بیچ ایک طرف دریا بہ رہا ہے اور دوسری طرف جھگیاں ہیں ان لوگوں کی جو پچھلے سے پچھلے سیلاب میں وہاں آ کے بسے ہوئے. 14 اگست ہے, ہم نے بہت خوبصورت جھنڈیوں سے اس روڈ کو چڑھا رکھا ہے. پچھلے سیلاب کی تباہ کاریوں سے تنگ آ کے جو لوگ یہاں آئے تھے وہ آج بھی اسی جھگیوں میں رہ رہے ہیں. ان بچیوں کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ سارا دن اپنے آپ کو واش روم جانے سے روکتی ہیں, کیونکہ روڈ کے اس پار بانس گاڑ کے کپڑا لگا کے باتھ روم پرووائڈ کیا گیا ہے, اور یہ رات کا انتظار کرتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ جائیں گی بیت الخلاء کو استعمال کریں گی. دے آر ناٹ سیف. مینسٹرل ہائیجین میں یہ بچیاں کپڑا استعمال کر رہی ہیں. پاکستان میں 80% بچیاں ماہواری میں مینسٹرل ہائیجین کے لیے کپڑا استعمال کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے بے پناہ انفیکشن کامن ہے. یورینری ٹریک میں بانجپن اور بہت ساری انفیکشن آف اووریز اینڈ فیلوپین ٹیوب ہوتے ہیں, کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور انفرٹیلٹی بھی ہوتی ہے ان کو. اور سمپل اویئرنیس اباؤٹ مینسٹرل ہائیجین اگر ان کو پرووائڈ کر دی جائے تو ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے.
यहाँ ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? प्रेगनेंसी की स्पेसिंग, माओं का रिकवर करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हम इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमें मालूम है आपके पॉडकास्ट की जो लिसनिंग और व्यूअरशिप है ना, यंग लोग हैं, और मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं यंग लोगों की तलाश में, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक रिवोल्यूशन ले आए हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक रिवोल्यूशन ले आए हैं। यंग लोग जब किसी चीज का बेड़ा उठा लेते हैं ना, हम समझते हैं कि शायद ये किसी और चीज में मगन, टिकटॉक में सिर्फ अच्छी चीजें, फन लविंग होंगे, बट इफ दे आर गिवन अ डायरेक्शन, अगर इनको ये समझ में आ गई कि इस कॉज के लिए ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, then they can bring a revolution in the life of this woman that we are trying to do it. Did you see the elections? Absolutely. It's a reality. You change it. Who could have ever believed that 75 साल से जो dynamics थी वो completely change कर देंगे. And the game changer, the catalyst is youth, which is now aware, Who which used is now social empowered. media to do it? Absolutely. The awareness game was so strong. Absolutely. So we were talking about too many things. मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं. Menstrual hygiene पे आपने बात की. शायद थोड़ा सा irrelevant भी हो, but since I have been talking to a lot of girls who are from the age bracket of 18 to 25, and they face the similar challenge कि जो उनकी period cycle है, जो कि normally 24 days या 23 days या 25 days होती है, have gone to 18 days, 16 days and even 20 days. तो वो बहुत शॉर्ट हो गई है, और ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों से बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये वाकई हो रहा है. दो इट्स फिक्स्ड, वो हर 18 दिन के बाद ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट हो गई है. तो इज देयर अ साइंस बिहाइंड इट, एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? First of all, I do not have access to any study जो कि जिसको डॉक्यूमेंट कर लिया है. Okay. लेकिन मैं ग्रीन स्टार के सब सितारा नेटवर्क पे आने वाली, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, जीपीज एंड एलएचवीज हमारे इन आने वाली लड़कियों से, यूथ से या कपल से बात कर रहा होता है. आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, फेडरल ड्रग और ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको अपना काम बड़ी चाबुकदस्ती से करना पड़ेगा. पाकिस्तान में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दस्तयाब हैं और होनी भी चाहिए हर जगह. और मीजोप्रोस्टल ये एक दवा है जो कि सर्विकल एग्जामिनेशन, बच्चादानी के पेनलेस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होती है. ये पोस्टमार्टम हेमरेज, पैदाइश के बाद, जचकी के बाद थोड़ी बहुत जो ब्लीडिंग होती है उसमें इस्तेमाल होती है, और एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती है. रेगुलेशन ना होने की वजह से हार्मोनल प्रोडक्ट्स गली गली दस्तयाब हैं, इवन एज ओटीसी प्रोडक्ट्स. या मोहल्ले का डॉक्टर जो जीपी है उससे जाने के बजाय, क्योंकि एक्सेस नहीं है, उनके अपने बाइसेस हैं, नहीं होने की वजह से ये लड़के लड़कियां, यंगर पीपल, यंगर कपल, they are going to the chemist and relying on their information. They are handing them over these medicines as if they are OTC products. What are OTC products? OTC over the counter products. Okay. Over the counter products नहीं है ये. Hormonal contraceptives, they are serious medicines to help a woman avoid pregnancy. मसलन अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो उसके बाद फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल ले ली जाए तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है. Okay. या अगर वो डिले हो जाए, Immediate pills. या Okay. इसके अलावा मीजोप्रोस्टल नामी दवा आराम से दस्तयाब है. जब ये दवाएं बगैर किसी मौलिज की निगरानी के गलत डोसेज में गलत पेशेंट को मिल रही होगी, तो यही प्रॉब्लम होगी जो हार्मोनल साइकिल का इम्बैलेंस करती है. Also, you talked about early marriages, which are also most of the times forced. So, एक infertility वाला भी factor आता है, मतलब factor नहीं आता, वो कहा जाता है कि you should get married by 28, by 30, before 30, because of the infertility rate which increases after 30. तो 30 के बाद आपको pregnancy में मसला होगा और fertility में problem होगी. Is this a reality or a myth? Okay. ये जो अर्ली मैरिजेस हैं, अर्ली मैरिज मसलन प्यूबर्टी के फौरन बाद मैरिज हो जाती है. अगर 13 साल 14 साल की शादियों में, कम उम्री की शादियों में चांसेस हैं कि दिस गर्ल is going to become pregnant and again and succumb to the problems and complications of complicated pregnancies, right? लेकिन अगर प्रेगनेंसी स्पेस्ड है या पहली प्रेगनेंसी को अगर डिले करने के लिए कोई मेथड ले लिया गया है,
तो ऐसा हरगिज भी नहीं है कि हमेशा के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। ये एब्सोल्यूट मिस है। मैं आपको बताऊं, अभी एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हमने किया है पॉपुलेशन इनोवेशन फंड की मदद से। 30 यूनिवर्सिटियां चुनी गई और 30 यूनिवर्सिटियों में हमने तकरीबन ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग में 600 असातिज़ा को ट्रेन किया, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इन असातिज़ा ने फिर 11,000 स्टूडेंट्स को train किया on 2-day workshops, and alhamdulillah they are trickling it down to their own community, because soon after their graduation there is a lot of pressure on our girls to get married. So are they prepared? Do they have the right information? Do they have access to this information? Perhaps not. So this methodology, with this initiative of taking to those big numbers of students within universities and preparing them how to start their nest, has really proven to be an excellent experiment. And I think ये जो premarital counseling के साथ साथ ये भी कि what to expect when you are going to get married, sexual and reproductive life, what is it like, what are the challenges, what to anticipate. People walk into it without having been prepared. So when you are not prepared, you panic and then make decisions which are not based on evidence and end up with complications. So I think निकाहनामे में शायद ये शिक होनी चाहिए, और इसमें आप ही लोग यूथ की तरफ मैं देखता हूँ कि एडवोकेसी के लिए एक बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार को मोटिवेट करने के लिए उनको ये चाहिए कि यूथ डिमांड कर रही है। जब लोग डिमांड करते हैं तो पॉलिसी साज भी उस तरफ मुतवज्जा होती है, राइट? तो शायद ये यकीनी बना दिया जाए कि हर निकाह से पहले कपल की प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूरी है। तो बहुत हद तक कॉम्प्लिकेशंस, इसके मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, you will have couples who are better prepared. People don't even read their nikahnamas. You are absolutely right. I didn't read my nikahnamas. अच्छा ओके वैसे बहुत अवेयरनेस से रिलेटेड इस पे कंटेंट बन रहा है। मैंने काफी हद तक टेलीविजन शोज भी देखे जिसमें बात की जाती है, लेकिन मैंने अपने सर्कल में किसी को नहीं देखा जो इतना सीरियसली इस चीज को ले रहा हो कि हाँ भाई मुझे अपना निकाहनामा पढ़ना है। इवन अ कजन ऑफ माइन एंड अ सिस्टर, एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली, एंड मैंने उनको बोला कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए, देखो कितना ज्यादा अभी अवेयरनेस कंटेंट भी इस पे चल रहा है, एंड दे लाइक कुछ नहीं होता। Actually, Green Star is really starting because we go door to door and do the neighborhood meetings. We are encouraging the service provider, and it's a program that we are having. It's called Beyond Bias, and we are doing with the support of donors. We are very grateful to Pathfinder and other agencies who are supporting us in this. It's called BHFA, and we are trying to address कि सर्विस प्रोवाइडर्स या डॉक्टर्स जिनके पास यूथ जाना भी चाहती है, उनके अपने बायसेस हैं। चलो बीबी 2-3 बच्चे करके फिर आना। अरे भाई उसने अभी तालीम मुकम्मल की है, अभी उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, नौकरी पकड़नी है उसने, उसको 2 साल का वक्फा देता है, जीने दो यार उसको अपनी जिंदगी जीने दो, उसको इख्तियार दे दो। ये कितनी मरतबा प्रेग्नेंट होना है, कब प्रेग्नेंट होना है, और प्रेगनेंसीज के दरमियान स्पेसिंग होती है, इसका इख्तियार उसका हक है। वर्ल्ड वुमेन्स डे मना रहे हैं ना, तो इख्तियार की बात हो रही है, एम्पावर कर रहे हैं आप उसमें। तो जब तक ये कल्चरल, सोशल टैबूज, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं कॉन्कर किया जाएगा, स्टीरियोटाइपिंग नहीं होगी, तो तोड़ी नहीं जाएगी, उस वक्त तक ये यूथ अपना वो किरदार अदा नहीं करेगी। हम एक बहुत जबरदस्त बात जो समझने की है, इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है। पाकिस्तान की 50% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और अगर ये घरों में बैठ रही हैं तालीम पाने के बाद या शादी करने के बाद, एक के बाद दूसरे बच्चे की विलादत में मसरूफ हो रही है, तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, you are keeping 50% of your population out of the economic activity. Can you imagine the impact? How can Pakistan prosper when 50% of the population is at home? So empowerment of women comes with this awareness, giving her the choice, engaging in the decision making. And I think premarital counseling, as it is known, it should be made mandatory. Why is there a pressure to give
for on women to give birth to the kids, क्योंकि वो dependent एक डिपेंडेंसी है बच्चों पर. मतलब बाहर भी तो ये चीज़ हो सकती है ना, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स. काफ़ी हद तक यहाँ पर ये चीज़ है. तो डिपेंडेंसी इज द फैक्टर जिसकी वजह से उनको पुश किया जाता है, इसके बाद एक और बच्चा, इसके बाद एक और बच्चा. मैम आपके सवाल में जवाब भी है ना. और रमजान आने वाले, इस वक्त लाखों की तादाद में साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध से लोग नकल मकानी करके कराची भीख मांगने आ रहे हैं. वो अपने साथ अपनी बूढ़ी बड़ी बीवियों को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी भी अगर आएंगी तो उनको देख के दिल पसीज जाता है जल्दी. अपने साथ छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं. वो उन बच्चों को गोद में टांग करके हर सिग्नल पे 5-5, 6-6, 12-12 औरतें खड़ी होंगी वहां पे और भीख मांग रही होंगी यहाँ पे. तो ये नकल मकानी का सिलसिला, ये प्रेशर, ये क्यों है? जब तक किसी माशरे में दौलत की मूवमेंट बच्चों से पेरेंट्स की तरफ होगी, बच्चा अगर माँ बाप की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इकोनॉमिक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं अगर 8 बच्चे पैदा करूंगा, 3 तो मर जाएंगे डायरिया और निमोनिया की वजह से, 2 भाग जाएंगे और वो किसी फुटपाथ के वर्कशॉप पे काम कर रहे होंगे, चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो रहे होंगे. 3 जो बच जाएंगे मेरे पास, उनको मैं टिश्यू पेपर और दूसरी चीजें, कलम, मुख्तलिफ चीजें पकड़ा के सिग्नल्स पे खड़ा कर दूंगी और ये पैसे मांगेंगे. एक एक पेशेंट, कल ही एक साहब ने डेटा बताया, 5-5, 6-6 लाख रुपए सिर्फ रमजान में ये बेचारे लोग कमा के जाते हैं, क्योंकि पैसे का फ्लो फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट्स है. सो पाकिस्तान की आबादी का फैलाव नहीं रुक सकता. अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर फखार भुट्टा, खान यूनिवर्सिटी, ब्यूटीफुल पेपर, उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस किया है कि जिन मुल्कों ने आबादी के फैलाव पे काबू पाया है, उन्होंने 3 चीज़ों पे काम किया है. फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाई, पॉवर्टी एलिविएशन पे काम किया, और तीसरी काम जो की है उन्होंने एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया. बहुत जरूरी. जब तक ये तीनों चीजें साथ नहीं होंगी, हमारे यहाँ हमें मारने के लिए कोई बम की जरूरत नहीं है, लोगों का सुनामी हमें बहा के लेगा. True. So I think and all these 3 things are interrelated. Absolutely. अच्छा, आप डिजीजेस पे बात कर रहे थे और आपने यंग पॉपुलेशन की बात की. सो यू सेड कि 50% तो हमारी पॉपुलेशन वुमेन की है एंड यंग फीमेल्स आर आउट देयर. सो हाउ कैन दे प्रिवेंट देयरसेल्व्स एंड अदर्स आल्सो फ्रॉम दीस डिजीजेस? ये भी आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है, क्योंकि बरकाए मेरी जाने बियदे बैजा लेकर, अब आसमान से तो कोई मदद आने वाली नहीं, जो करना हमें खुद ही करना है. बिल्कुल. और मेरा जो बहुत उम्मीद है इस मुल्क की यंग जनरेशन से, दे कैन बी द गेम चेंजर्स. मैं एक वाकया बताऊं, पिछले 4 साल से ग्रीन स्टार इन कोलैबोरेशन विद द प्रेसिडेंसी, समीना आरिफ अलवी जो है वो हमारे साथ कैंपेन कर रही थी. हमने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में मुहिम चलाई. हर साल 80,000 औरतें इसका शिकार होती हैं, और हर 8वीं औरत, कहीं भी बैठी हुई औरतें, 8वीं 9वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर होगा. इट इज दैट कॉमन. हमारे मुल्क में ये भी देखा जा रहा है कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में यंगर पेशेंट्स आर शोइंग अप. यंग गर्ल्स as young as 15, 16, they are reporting with breast cancer. Now, breast cancer एक टैबू है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता. हर खुराफात बात हो रही है घर में, लेकिन कोई बच्ची अपनी माँ को, बाप को या भाई बहन को बताते हुए शर्मा रही, एक मजाक बन जाएगा. सो ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग ने बेड़ा उठाया हुआ है, एंड वी हैव ट्रेन्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर, जो सब सितारा क्लिनिक है, कि कैसे ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाया जाए. ठीक है. हमने गॉगल्स फराहम किए क्लिनिक, आसपास बच्चियों को इनकरेज किया जाता है वो आए. ये सर्विस प्रोवाइडर्स उन स्कूलों में जा रहे होंगे, और उन स्कूलों में जाके वो गॉगल्स लगाते हैं, VR गॉगल्स. उसमें एक मोबाइल फोन डाला जाता है, एंड दे कैन लर्न हाउ टू सेल्फ एग्जामिन एंड पैल्पेट देयर ब्रेस्ट. नहाते वक्त अपनी छाती का कैसे मुआयना कर लिया जाए. तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे अहम मैसेज जो सब सितारा दे रहा है, ग्रीन स्टार दे रहा है, जो आपके तवज्जो से फैलाना है, कि स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया जाए
टीचर्स प्रिवेसी में उनको सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट सिखाते हैं. इससे होगा क्या, कैंसर गिल्टी के तौर पे, उसने कहा था ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. एक बॉल पेन की टिप के बराबर कैंसर शुरू होने से इतनी बड़ी गोली जो पेल्पेट हो जाएगी पेट में, कई साल लग जाते हैं. तो अगर उसकी आदत होगी और वो सही वक्त पे पेल्पेट कर लेगी, इट विल बी रेफर्ड टू अ सर्विस प्रोवाइडर जो उसको डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड या मामोग्राफी के जरिए ट्रीटमेंट देके जान बचाई जा सकती है. सो इसमें एक तो ये एरिया है जिसमें ग्रीन स्टार काम कर रहा है, और जिसमें आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू these universities and college girls and boys to start this as a तहरीक. मैं आपके तबस्सुम से उन तक क्यों पहुंचना चाह रहा हूँ, एक मर्तबा इस तहरीक में यूथ शामिल होगी तो उसको फिर रोक कोई नहीं सकेगा, एंड फिर रिवोल्यूशन आना ही आना है. So we can save a lot of girls and boys and women dying from breast cancer. By the way, breast cancer सिर्फ लड़कियों में औरतों में नहीं होता है, male also suffer from breast cancer. Seriously? Yes. And they do not know it, and it is very serious in male because they keep on confusing it with a lot of other conditions. Okay. So if at the colleges and school level, we are able to create some information, awareness, okay, we can teach these girls, make it mandatory for teachers कि वो पीरियड होते हैं, पीटी के पीरियड है, एक्सरसाइज के पीरियड है, उसमें एक पीरियड डेडिकेट कर दें, हर बैच को ट्रेन किया जाएगा. And Green Star is taking. This should be part of schooling, by the way. Absolutely, absolutely must. So ये तो हो गया ब्रेस्ट कैंसर जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, इससे बचा जा सकता है. तो हर लड़की पे वाजिब होना चाहिए कि अपने लिए 5 मिनट निकालना है सेल्फ एग्जामिन करने का. अब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, वुमेन्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये इतने जरूरी इश्यूज हैं जिनके एक दिन के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, एक इदारे पे नहीं छोड़ा जा सकता. इसके लिए पूरी फौज को, यूथ की फौज को तहरीक बनाना होगी, और आप लोग बना सकते हैं. You guys can do wonders. मैं देखता हूँ आपकी व्यूअरशिप में इतने यंग लोग हैं. अगर सिर्फ एक बार मैं एक छोटी सी बात कहूँ, एक लड़की थी, आई थिंक नाम उसका याद नहीं है, वो शी वाज वर्किंग फॉर ए FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी. तो उसका एक रूल था कि इफ यू आर गोइंग टू बी हायर्ड एज असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, you can't get married or get pregnant because you are a career woman. Okay. So, but after marriage, she joined and she became pregnant. As a result, when the management came to know about it, they fired the girl. Shit. और उसने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी. And? उसने जॉब छोड़ी, फेसबुक पे बैठी और 4000 लड़कियों का एक ग्रुप बना लिया. अब सैनिटरी नैपकिन बेचने वाली कंपनियां झक मार के उसके पीछे जा रही हैं कि मैडम प्लीज मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कर दें यहाँ पे. That's the way to go. So ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करनी जरूरी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस बात करने की जरूरी है, बचाया जा सकता है. और हम ग्रीन स्टार यूथ के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू करने वाली है जिसका नाम है सुनो सहेली कैंपेन. अच्छा. Premenstrual period and pain and breast tenderness is very common. So we are now propagating within community. Okay. Training Sitara Bajis who are training girls within the community. Our most successful project is in Liari. Seriously? Oh, and Liari girls, we call them power girls. Okay. These are jobless, interpass and graduate girls who did not have any means of earning. Okay. They were trained in self-care. And basic information about menstrual hygiene, breast cancer, family planning, and so on and so forth, so that they can counsel the people in the community and refer them to any service provider. And they are doing a fantastic job. So now youth, taking things in their own hand, is working on breast cancer prevention, menstrual hygiene, family planning, myths and misconception, neonatal mortality reduction measures on their own. Amazing. You see the power of youth, what you guys can do. Amazing. मैडम, मैं ऐसे तो नहीं यहाँ आ गया हूँ, बड़ी उम्मीदें लेके आया हुआ हूँ यहाँ पे. और वुमेन्स डे के ऊपर सिर्फ लफाजी नहीं करनी है, हमें कोई सही मैसेज देना है जिससे कोई तब्दीली आ सके. राइट? एक चीज जो मेरे जहन में रह गई है, शादी के बाद माएँ बनती हैं और अब्बा बनते हैं, लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि अगर माँ जिस दौरान प्रेग्नेंट है उसकी ग़िज़ा का बैलेंस्ड एनर्जी प्रोटीन उसको नहीं मिला
तो माँ की ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चे के पे असर होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी. Northern areas में up to 40% children are suffering from growth retardation. Growth and stunting of growth is seen there. They are physically and mentally not capable to perform their lives. And this continues even after they are born. So, बात तादाद की नहीं है, बात इस्तेदाद की है. Demographic dividend नहीं मिल सकता जब तक हम सेहतमंद बच्चे. So, I'm inviting the youth of Pakistan to join hands with Green Star so that we want to create a revolution. Let the young women of Pakistan enjoy their motherhood. Amazing. Celebrate their womanhood. Amazing, amazing. So 2 questions. सबसे पहले ये कि how does Green Star finance itself? क्योंकि ये भी ज़हन में चल रहा है कि अगर आप इतना सारा social work कर रहे हैं, social impact create कर रहे हैं, तो how are you financing your organization? And secondly, जो लोग आपके साथ इस एम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जैसे आपने अभी लास्ट मैसेज दिया है और खवातीन को आप इंस्पायर कर रहे हैं टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस कॉज, तो हाउ विल दे बी अर्निंग समथिंग और नॉट, व्हाट विल दे बी गेटिंग आउट ऑफ इट? ओके मैम, इसको सवाल का जवाब देने से पहले लेट्स सेग्रीगेट कमर्शियल सेक्टर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन commercial sector and not for profit, that commercial sector wants to make profits to sustain itself and grow, right? Any commercial sector, बहुत सारी fast moving consumer good new startup clinics. Whereas not for profit organization or non-commercial sector also earns revenue, but plows back this revenue within their system. Nobody takes the profit home. That's number one. And the money that is generated is usually made to create increased awareness about menstrual hygiene, about clean drinking water, about breast cancer awareness, cervical cancer awareness, reproductive methods, contraceptive methods availability, access, and so on and so forth. So they are doing the social good. So this is the two differences. Both companies make profits, but not-for-profit organizations who are working for the developmental sector tend to plow back that money, and they increase the awareness. Now, a very important question that you said, that Green Star is doing whatever it is doing for the last 32 years, and we are really grateful to our many donors and international donors and who have been supporting us. But they can support us with commodities, contraceptive medical medicines, and gadgets, and funding for keeping the on-ground staff. So that can be sustained only for a limited period. So these models, once they are created, they are the models that create the awareness and are up for the grasp for the government sector. Eventually, the resilient and self-sustaining environment, which is on the large scale, can only be created if in the government's priority, family planning, reproductive health, maternal and child mortality is on the agenda. In the previous government, maternal and child mortality took 75 years for maternal and child mortality to come in the Premier's opening address. We are hearing that currently also some of the parties have got it on the agenda that family planning and reproductive health is going to be on their agenda. So first of all, political will is absolutely necessary. Without political will, government will not be interested in taking it up and putting it to scale. What Green Star is doing, whenever we have a program, we generate our revenues by selling condoms. साथी it is known as. ऊशू चले जाएं या कलाम चले जाएं, नेस्ले के बोतल के साथ साथ कॉन्डम, पुअर मैन्स कॉन्डम जरूर मिल जाएगा. So Saathi Touch and Do is available from Ushu Kalam to Mithi and Sakro. So when these condoms which are imported from outside are sold, we generate money and we plow it back to take care of our service providers. They're continuing medical education. They're continuing professional development. We tell them how to do their branding, how to do their clinics external branding, how to provide the information care, how to handle difficult situation, how to manage data, how to use that data for analysis. So proper training उनकी हर चीज की हो रही है. Absolutely. And
recently, for the last 2 years, we have started training our service provider on social entrepreneurship. Acha. Yes. Wow. And this is where a lot of CMWs, one of our largest program is training is taking place in Sindh, and the other two projects are in Punjab and KPK, whereby we are constructing 200 clinics, and we are using the community midwives who were trained by the government. They were jobless. Green Star, with the donor funding, is creating clinics, 1 to 2 room clinics, fully equipped, branded, and these service providers are also trained in social entrepreneurship. How to run their clinics on business grounds. Amazing. How to create the primary demand. So Wow. what they've started doing, that these service providers whom we have trained in social entrepreneurship, they've started hiring Sitara Bajis. Acha. Sitara Bajis kaun hai? These are community mobilizers. They are much more efficient than male mobilizers because they get inside the homes. They People identify are with the comfortable. women. They know in each household कितने बच्चे हैं, कितनी भनगंदे हैं, कितनी भावजे हैं, कब किसके यहाँ कौन सा बच्चा होने वाला है, किसके बच्चे को दस्त आ रहे हैं, किसको उल्टियाँ आ रही हैं, किसको गिल्टियाँ हो रही हैं, because they are people from the community. So these Sitara Bajis counsel these patients and bring these patients back to the service provider. For every patient that she brings back, she gets a commission of 50 rupees. Secondly, within that community, women are going to get pregnant. Mm-hmm. But for safe pregnancy, WHO की अब requirement है कि now 8 visits are mandatory. A mother from the booking visit till the delivery should visit the service provider, gynecologist, obstetrician, GP 8 times, so that baby and the mother are taken care of. But people forget. They don't show up. So what these Sitara Bajis do, they bring them back. So once our program is over, these service providers are so convinced that primary demand creation and customer care is so essential that they end up hiring these on their own payroll. अब 8 दफा जाएंगी तो 8 दफा उनको 50 रुपए मिल रहे होंगे उसमें. तो इससे फायदा क्या है? Because compliance, pregnancy is not a disease. So people don't take it very seriously कि folic acid लिया है कि नहीं. और ये ज़्यादातर माएँ कौन है? जो औरंगी में, झोपड़पट्टियों में रह रही है. और ये तो बहुत अच्छी बात है, इवन अगर वो उनको मतलब फोर्स तो नहीं कहेंगे, बट मोटिवेट करती है इस चीज के लिए कि आप जाएं, विजिट करें, दूसरा विजिट करें, तीसरा विजिट करें, तो उनकी भी भलाई है. Absolutely. और इनको supplementation भी. अच्छा, how do they make money? They have been given a basket which is known as business in a box. उसके अंदर folic acid है, calcium है, vitamin D supplementation है, एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए एनीमिया की टैबलेट्स हैं वहाँ पे. तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जीपी, उनको जब सिखाते हैं तो ये सितारा बाजीज आर ऑल्सो इंश्योरिंग कंप्लायंस टू लॉन्ग टर्म थेरेपी. सर दर्द की दवा लोग लेते हैं, आयरन कैल्शियम लोग नहीं ले पाते. So it is absolutely attention and important कि long term relationship, client relationship becomes an integral part of the training of the service providers, whether they are GPs, CMWs or LHVs running their 1 to 2 room clinics. And in order to go the last mile, मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं. We have created container clinics. ये मोबाइल 20 फीट बाय 10 फीट के कंटेनर्स हैं, और उन इलाकों में जहां कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई केमिस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ की CMW और LHV मौजूद है, हम वो कंटेनर वहाँ रख देते हैं. It is fully equipped. It has got an OPD, a washroom, a pharmacy, an examining room and a procedure. Amazing. So you have actually created. और मजे की बात ये हुई है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, इनका मियाँ अगर कहीं और पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था, उसने छोड़ा वो और इसकी फार्मेसी वो संभालना शुरू हो गया. उसने लाइसेंस लिया, फार्मेसी चलाना शुरू किया, ये एडमिन संभाल ली उसकी. So now we have created an opportunity, an ecosystem comprising of husband, wife, both involved in the healthcare. It's a Sitara Baji attached to her, and she's bringing the clients. And then self-help की basis पे a resilient,
ecosystem is created. The conversation was very inspiring, and I hope people have loved the show. And if you have loved the show, you got to subscribe. Before closing the interview, आपका आखिरी message to the youth. I think 50% of Pakistan's population comprises of women, right? These people are not children of lesser God. No country can ever dream of prospering, thrive, without having 50% of its workforce out of the economic cycle. Women needs to be empowered by increasing their awareness, giving them control in decision making, and decision making about how many times they want to get pregnant, when do they want to get pregnant, what spacing they think they would like to have between pregnancy. Help them, protect them through advocacy, policy making, identify. Gender-based violence is very common. Identify, protect them from domestic violences, abuse them. उनके लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, पहले उनको जिंदा तो रखो. ये औरत, अगर किसी घर में बाप मर जाए, बच्चे पल जाते हैं. किसी घर से माँ चली जाए, उसका शिराजा निकल जाता है, isn't it? So keep that nucleus alive, आपके काम आएगा. Amazing. Thank you so much, Dr. Rab, for being with us today. Thank you for inviting me and having me, and promise that you're going to get me a lot of young people I will. who are going to, in our view, be the game changer for this country. Inshallah. Right? Let's empower women of Pakistan. Of course. मैं तो वैसे इस चीज के लिए बदनाम भी हूँ, by the way. No, I think That you always talk about women empowerment. You got to talk about other topics as well. A lot of friends also now started telling me this कि maham और topics भी touch करो. tell me But about मैं Pakistan. 50% women, one arm tied. Can I win the war with one hand? 50% of your people are out of economic activity. How the hell do you think you're going to win any war? Battle to throw a war, kaun si jeetenge aap? You wouldn't be able to win anything. So let's empower women. The best thing to empower, and respect women. And how can you respect anyone? I love you. That's not good enough. Are you engaging me in decisions that are going to involve my life? respect. The यही best चीज़ है. way of loving me is let me take part in decisions that concern me. I need to be involved. It's my life. Allah has given me this right. Please don't take this right away. I think the final message is that empower women, respect women, engage women. Give her that space. Right? Done. वो आपके काम आएगी. Done.